चाहिए कि सबको पता चले कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। और दूसरी ये कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे कि सब एक जगह पे जमा हो और सारी कम्युनिटी लाइक पूरी पाकिस्तान पूरा हो, सब कम्युनिटी, नहीं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अलग अलग करें, बल्कि सब मिल के एक जगह पे एक्टिविटी करें ताकि शो ऑफ हो कि कितने पाकिस्तानी हैं और यूनिटी पता चले सबकी। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, आई थिंक इसके पहले जो पार्ट है उसका जवाब तो आप लोग दे चुके हैं कि जी सबको मिलकर करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो दूसरा उनका पार्ट था वो ये था कि इंफॉर्मेशन नहीं होती इवेंट्स के बारे में, तो लोगों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचनी है उसके हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? That is the question. So the people are not being informed about yes, the events? Okay. We've tried very, very hard to be able to try to communicate with people. One of the challenges we face is that, in my opinion, there's a group of people that don't want to be communicated with for whatever reason. And there is a group of people that want to know about events, but have no means. Whenever we have an event, we advertise through newspaper, whatever the local community newspaper is. We do our very best to advertise via radio. We use our website, which gets upwards of 5,000 to 6,000 hits a month. Whoever has requested to be on our email list, we communicate with. Whoever has provided us a phone number, we make an effort to make personal calls to each and every person. At every single event, we ask people to provide their contact information. We don't ask them to become members. We simply say the importance for us is to know who you are and where you are. So really, if people are wanting to know about events, they know that there are associations out there. That's not a mystery. People should not be surprised that there's Pakistan Canada Association or PCCA that's out there. Part of the responsibility is on them to communicate with us and say, look, I'm here. I want to know what's happening. Can you please communicate with me? And we're more than willing to do that. Thank you. I think it's very important for community to look in the newspapers and continuously go on our websites if they're interested to look at the programs, because just like Farouk said, we already have 12 months programs announced on the website. So I think it's very important for the community to take a part of and look into the events as well. And well said, Mr. Raza. I think we're doing our job, we're doing our part. Maybe we're not doing enough. We will make sure that next time if we have any other resources, because I'm sure we have media, print media. We also have a radio station, which is not our own radio station, but people listen to these radio stations. We go to those radio stations and announce the events. And if people still miss out, then I think we need to look into what we need to do more in order to send our message. Thank you. तारिक भाई, इसी में अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूँगा। इन खातून ने जो सवाल पूछा उसमें एक हिस्सा ये था कि एवरी मंथ प्रोग्राम होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी वेबसाइट पे एवरी मंथ प्रोग्राम आर ऑलरेडी अनाउंस्ड। मार्च में हम इवेंट करा रहे हैं, 23 मार्च का। अप्रैल में हम हेल्थ क्लब कर रहे हैं, मई में हम स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं, जून में हम कैनेडा डे पिकनिक मना रहे हैं, जुलाई में कैनेडा डे मना रहे हैं, अगस्त में 14 अगस्त। सो पूरे साल के और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी इस कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि जो एवरी मंथ इवेंट ऑर्गेनाइज करना इज नॉट अ जोक। उसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हम परफॉर्म करें और कम्युनिटी की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। सेकेंडली, कतई तौर पे ये गलत बात है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जितने भी हमारे इवेंट्स आते हैं उनका रेडियो स्टेशन पे भी अनाउंस होता है, तमाम अखबारों में एडवर्टाइज होता है। हम लोग हर मुस्लिम दुकान पे जाके पैनल प्रिंट करके वहाँ पे लगा देते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, डेफिनेटली वो अब लोगों का होता है, कई लोगों को नहीं मिलती तो वो तो यही कहेगा कि we need to do more. But we community do more for community. You have on your website, do you have the schedule of your programs? We have a schedule of programs. We have details of past programs. We have phone number and email for the president and general secretary. We have
many ways for people to communicate with us. Fantastic. The one thing that I want to emphasize is that we don't know how many people are out there, and we don't know who you are or where you are unless you communicate with us. So really, I really want to stress that the onus is on the individual that wants to be part of the community. We can only do so much. We can provide the venue, we can provide the place, but they have to be willing to come. Correct. Let's move to another बस question. इसका क्वेश्चन ये है कि जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली पाकिस्तान से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग तो PCA और PCCA उन न्यू इमिग्रेंट्स की सोशल और मॉरल सपोर्ट के लिए क्या कुछ कर रही है? मुझे तो कुछ ज़्यादा नजर नहीं आता मीडिया पे बार हो सकता है कर रही हो मगर अगर कर रही है तो ये मंजर यहाँ पे आना चाहिए कि न्यू इमिग्रेंट्स को कैसे हवाल कर रही है. Many a situation where people have, prior to arriving in Vancouver, have communicated with us from Pakistan and said that I'm going to be arriving on this particular day. Can you please secure, transportation for me, housing for me, and whenever we've been asked to do that, we've done so. There have been people out there that we have helped to secure housing upon their arrival. We've taken them out to buy furniture and clothing. We've got them job interviews, etc. So again, that's if people are wishing to have that and communicate with us, we're more than willing to do so. People have to keep in mind that we have no outside funding other than whatever resources we're able to generate amongst the board of directors and membership. So, do we have facilities to be able to provide temporary housing? No. Do we have facilities to be able to provide an opportunity to take them out job hunting? Well, of course, if it's within our time and if it's within something that we're able to do. This is one area that I think there are a multitude of Canadian organizations that do a wonderful job of getting people settled. Is this something that we want to take on as an association? It's something that we're very willing to do. But until we can get some outside funding, primarily from government resources, realistically, it's not something that we're going to be able to do on a consistent basis. Sorry, Giannis, I just want to add to Raza. The voluntary housing is, Masjid has been housed many people. Hundreds of immigrants have stayed at the Masjid. The Masjid is always there for temporary. People have gone there, they have stayed there until they found a place to live. Today the families are coming. Before it used to be individuals coming. So it gets difficult unless we have a proper form of house, because you don't want a family staying with a bunch of single people. So as Raza has said, unless we have the resources, we volunteer our own money sometimes and we give to people and we say अगर किसी को जगह मिलती है तो हम खुद अपने पैसे दे देंगे, मगर मस्जिद हमेशा एक जगह है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हाउस में भी ये हम प्रोवाइड कर सकें. That's very good. जी फारूक सर. तारिक भाई, बात फिर वही से शुरू होगी कि मैं खुद एक ऐसी मिसाल यहाँ पे बैठा हूँ कि कोई किसी एसोसिएशन ने न्यू इमिग्रेंट्स की मदद की कि नहीं. मेरी मदद की. जब मैं यहाँ पे आया एक एसोसिएशन ने मेरी मदद की, PCCA ने मेरी मदद की और उसी जज्बे की वजह से मैं आगे इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि हम भी तमाम न्यू इमिग्रेंट्स को मदद करें. जिस तरह मैंने बताया कि हमारे ब्रोशर्स हर जगह पे मौजूद होंगे, दैट विल हेल्प पीपल टू कम एंड कॉन्टैक्ट अस. यहाँ पे हमने जो विद इन द एसोसिएशन मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी जॉब बैंक एक तश्कील दिया हुआ है. उस जॉब बैंक में जितनी भी सिक्योरिटी की जॉब्स, गैस स्टेशन पे जॉब्स या इंजीनियरिंग की जॉब या बहुत सी जो कि क्विकेस्ट वे में लोगों को मिल सकती हैं, वो हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है. जो भी नए लोग आते हैं हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको पूरी मदद करते हैं और ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आई कैन प्रोवाइड यू जिनकी हमने लोगों ने मदद की.